हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन टॉपिक। क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन इन बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 3। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का बात किया था, बेसिक मैथ्स पार्ट 2 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। क्या बातचीत करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को समझने के पहले हमें यह जानना होगा फंक्शन क्या है। व्हाट इज द फंक्शन? सो फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? फंक्शन मींस रिलेशन। फंक्शन मींस व्हाट? रिलेशन। रिलेशन मींस डिपेंडेंसी हाउ वन टर्म डिपेंड अपॉन अदर टर्म। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पे, जैसे y इक्वल टू, इसको ऐसे पढ़ेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और f मींस फंक्शन, है ना। f क्या डिनोट कर रहा है? f मींस फंक्शन, मींस y, इसको ऐसे पढ़ेंगे y इज ए एफ ऑफ x, और इसको ऐसे पढ़ेंगे कैसे? y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, और y डिपेंड्स अपॉन x, y डिपेंड्स अपॉन x। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज y इक्वल टू एक्स लिखा है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख रहा है। इस पे आते हैं, अभी इस पे अभी आते हैं, ठीक है। y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कुछ बच्चों तो इसी को देख रहे होंगे पहले, ये क्या लिखे हैं मास्टर, ये मास्टर यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि आते हैं उस पे, अभी आते हैं। y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अगर x में चेंज होगा, if x will change, y will also change. Here also, if x will change, so definitely y will change. x चेंज होगा, y चेंज होगा। सपोज, है ना, देखिए यहां पे, अगर x डबल होगा, सपोज x become 2 times, so here y also become 2 times. But here if x become 2 times, if here x become 2 times, so y become 4 time y। अरे भाई, यहाँ पे 2 है ना, सो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो कहानी ये है कि अगर यहाँ पे x 2 गुना होगा तो y कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा। अगर यहाँ पे x 2 गुना होगा तो y कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। डिफरेंशिएशन, ये y डिफरेंशिएट कर रहा है दोनों में, y खुद ही डिफरेंशिएट कर रहा है। जैसे रियल लाइफ में भी क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, मतलब एक को दूसरे से डिफरेंशिएट किया जाता है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंशिएट किया जाता है, किसी को अच्छा माना जाता है, किसी को अच्छा नहीं माना जाता है। वही कहानी यहां पे है, सेम कहानी है। अब देखिए हम, जैसे एग्जांपल, शाहरुख खान इज द फादर ऑफ, शाहरुख खान के 3 बच्चे हैं, वैसे 2 ही बच्चे का हमने नाम लिखा है, क्लियर, समझने के लिए लिखा है बस। शाहरुख खान इज द फादर ऑफ आर्यन खान, शाहरुख खान इज द फादर ऑफ अब्राम खान ऑल्सो, है ना। सपोज दोनों में थोड़ा सा चेंज आया, या सपोज ऐसे समझ लो कि दोनों को थोड़ा सा चोट लग गया, ज्यादा नहीं, खुदा ना खास्ता करे कि इनको चोट लगे, है ना, अल्लाह करे कि ये लोग जो है खूब जिए, है ना। तो सपोज करिए कि आर्यन खान और अब्राहम खान को थोड़ा सा चोट लगा, थोड़ा एकदम, और सेम अमाउंट ऑफ चोट लगा है, सेम अमाउंट ऑफ चोट लगा है दोनों को सेम अमाउंट ऑफ चोट लगा है। तो क्या होगा? अब शाहरुख खान का रिएक्शन दोनों केस में सेम नहीं होगा। शाहरुख खान का रिएक्शन जो है अपने छोटे बच्चे के केस में थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्टिव होगा, है कि नहीं? और जबकि इनके केस में उतना नहीं होगा, लेकिन अपने छोटे बच्चे के केस में ये ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे कि कैसे चोट लग गया, ये है, ठीक है। कहानी समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसको मैं रफ कर देता हूं पहले, है ना। Now, so y is a function of x, है ना। y यहां भी x का फंक्शन है, y यहां भी x का फंक्शन है, लेकिन y क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट कर रहा है दोनों के बीच में। y दोनों के बीच में क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट भी कर रहा है, रियल लाइफ में भी डिफरेंशिएट होता है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज गांव में एक बाप के सपोज 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, एक सपोज बड़ा है एक छोटा है। तो अगर बड़े वाले को चोट लगता है और वो बोलेगा पापा मुझे चोट लग गया, तो क्या बोलेंगे? आजकल के बच्चे को जो है एकदम थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो एकदम घर जो है सर पे उठा लेते हैं। हमारे टाइम पे हम जब थे तो चार बोरा जो है कंधे पे लेके चल देते थे। आजकल के बच्चों को थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है, ये है वो नहीं है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। अगर उसी पिता को, अब देखिए वही पिता वही है, अगर छोटे बच्चों को चोट लग जाएगा
तो क्या होगा, तो कैसा रिएक्शन होगा, अरे हमार बबुआ हो बबुआ, कैसे चोट लग गया इनको, कौन मार दिया, कौन चौकी से लग गया, चौकी से मारा, चौकी को मारा 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 चौकी को। पिता सेम है लेकिन रिएक्शन अलग अलग है, रिएक्शन अलग अलग है, डिफरेंशिएट हो रहा है, डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, दोनों बच्चों के केस में दोनों को डिफरेंशिएट किया जा रहा है, वही कहानी है। तो यहां भी y क्या कर रहा है, y डिफरेंशिएट कर रहा है इन दोनों के बीच में, y यहां दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा है। तो वही कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, कहानी डिफरेंशिएशन। स्टोरी क्लियर? आइए नाउ, तो स्टोरी इज व्हाट है ना, y डिपेंड्स अपॉन x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y डिपेंड अपॉन x, if x changes so y also changes, clear? now see here dx and delta x, small d is what, small letter, so it mean will be what, d is what, small d here, this is small, and d is what here, small letter, so it will be small change in x, small change in x means dx means what, small change in x, delta x is what, significant change in x, change in x। ना अब इसको कैसे यूज करेंगे, है ना, क्यों, why we are discussing this dx and delta x, because x changes, so x changes so y also changes, x changes y also changes, है ना। सिमिलरली dy क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन y, एंड सिमिलरली डेल्टा y इज व्हाट, सिग्निफिकेंट चेंज in y, clear, significant change in y, so y depends upon x changes, y changes, so now our aim is to find if x changes then how much y is changing, if x changes by some amount then how much y is changing, this is our aim is to find, this is our aim is to find। सो अब हमारा एम क्या है, अब हमारा एम है क्या पता करना, आवर एम इज टू फाइंड dy by dx, है ना, आवर एम इज टू फाइंड dy, दिस इज आवर एम इज टू फाइंड dy by dx, why, because we know x changes so y also changes, so if x changes by some amount then how much y is changing, that is our aim is to find, है ना, so our aim is to find what here, dy by dx means small change in x, dy means small change in y, for example suppose dy by dx you got 2, for example, suppose, so we can write like this, dy equal to 2 times of dx, means what, if whatever change in x, change in y equal to 2 times of change in x, yes or no, dx में जो भी चेंज हो रहा है उसका 2 गुना y में चेंज हो रहा है, स्टोरी क्लियर, उसका 2 गुना y में चेंज हो रहा है, dy इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dx, फॉर एग्जांपल सपोज dy by dx, फॉर एग्जांपल dy by dx is what, suppose 3, so finally dy will be how much, 3 into dx, means whatever change in x, change in y is how much, 3 times of change in x, clear। so अब कंक्लूजन क्या हुआ, हमने क्या डिस्कस किया, फंक्शन डिस्कस किया, y कैसे x पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर। अब फिर मैंने देखा कि व्हाट, अगर x चेंज हो रहा है तो y कैसे चेंज हो रहा है, अगर x इतना चेंज हो रहा है तो y कितना चेंज हो रहा है, दिस इज द स्टोरी। सो आवर एम इज टू फाइंड इन दिस टॉपिक व्हाट, dy by dx, if you know dy by dx, so we can say yes, if x is changing this much so y is changing how much, clear। Suppose dx change by 1, so y change by 2 into 1 means 2 times, so if change in x is what, 1, so change in y how much, 2, clear।
So this is so our aim is to find what? dy by dx. Our aim is to find in this topic dy by dx. Our aim is to find what? dy by dx. तो हमारा एम क्या है? हमारा एम है dy by dx पता करना. हमारा एम है dy by dx फाइंड करना. दिस इज आवर एम. आवर एम इज व्हाट? टू फाइंड dy by dx. दिस इज द आवर एम, है ना. अब क्या है कि कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको हमको याद रखना है. कैसे फॉर्मूला आ रहा है वो जानने की जरूरत नहीं है, वो सब मैथ्स डिपार्टमेंट का बातचीत है. हमें बस फिजिक्स के लिए फॉर्मूले को याद करना है और उसको यूज करना है न्यूमेरिकल्स में. जैसे फॉर्मूला नंबर 1, सपोज y इक्वल्स टू x पावर n टाइप है. y इक्वल्स टू x पावर n. सो dy by dx will be, है ना. Now put here y is what? x power n. So put dy by dx, है ना. Put y is what? x power n. y को यहाँ पुट करो. So finally this dx, and now this become whatever the power is there, multiply outside and decrease the power by 1. क्लियर? जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई करना है और पावर में से 1 माइनस कर देना है. ये है स्टोरी, है ना. फॉर एग्जाम्पल सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. y इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है. तो क्या हो जाएगा? dy by dx. पुट करो यहाँ पे dy by dx. d ये क्या है? एक्स स्क्वायर. y क्या है? एक्स स्क्वायर. y क्या है? एक्स स्क्वायर है. पुट करो यहाँ पे dx. अब क्या हो जाएगा? स्टोरी. x का जो भी पावर है, वट एवर द पावर ऑफ x, मल्टीप्लाई फर्स्ट and then decrease the power of x by 1, means 2 minus 1. So finally our answer will be how much? 2 into x power 1, means 2 into x. Any number power 1 is what? 1 need to write, है ना, x. Similarly suppose y equals to x power, or suppose y equals to root x. For example, suppose y equal to root x. Now, so this y we can write y equal to x power 1 by 2. We can write root means what? Power x by 2. So dy by dx will be how much? dy by dx will be what? Put here y. Y is what? x power 1 by 2. X power 1 by 2 upon dx. Now, what is the story? Whatever the power, multiply outside, so power is 1 by 2, and decrease the power by 1. So it will be 1 by 2 minus 1. So finally 1 by 2 minus 1, half minus 1 means minus half. So it will be 1 by 2 into x power minus 1 by 2. Or x power minus 1 by 2. How to write this one? Will bring x in the denominator. So it will be x power plus 1 by 2. And then root x power 1 by 2 is what? Root x. So finally it become 1 upon 2 root x. So finally dy by dx how much? What is dy by dx? 1 by 2 root x. So differentiation of root x become 1 by 2 root x. Differentiation of root x become 1 by 2 root x. Similarly, y equals to suppose x. So finally, next example, suppose y equal to x. So finally dy by dx how much? What is dy by dx? Now put here y as a x dx. Now either you can say here x power how much? We can say x means x power 1. Clear? dx, है ना. Interesting. See here, power how much of x? 1. X power how much? 1. And whatever the power is there, decrease the power by 1. So 1 minus 1. So finally it will be 1 into x power 0. And any number power 0 how much? 1. 1. So it will be what here? 1 into 1. Finally 1. So finally 1 into 1. Finally become 1. So dy by dx how much? 1. So in this case finally dy by dx how much? dy by dx will be 1. dy by dx will be how much? 1. इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल कर दो भाई. dx कैंसिल. आंसर इज व्हाट? 1 डायरेक्टली.
now huh? Now rule number 2 है ना, rule number 2, what, suppose y equals to some constant, y equals to some constant है ना, suppose y equals to some constant, clear, y equal to constant, so dy by dx how much, dy by dx will be 0, y 0, y 0, suppose y equal to 2 for example, 2 is also constant, you can take any number, not only 2, 2, 4, 0, 10, 100, है ना, 1000, any number. So if you put here dy by dx, so what here, dy by dx will be d of y how much, 2, put here 2. Now d of 2, I told already, d means change, d means what, change, d means what, change है ना, d means, sorry, d means what, small change or change, whatever you want है ना, you can say, so d is what, change or small change, whatever, so 2 it will be 0, 0 by dx, दो क्या है, ये 2 है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं होने वाला है, so 0 by something 0 here, so finally our answer is what here, dy by dx will be how much finally, dy by dx will be 0 here, so differentiation of any constant is what, 0. अच्छा, dy by dx one है ना, dy by dx is what, here we are saying like that, this one, rate of change of y, rate of change of y, rate of change of y, rate of change of y with respect to x, clear, we can also say है ना, our aim is to find dy by dx, already I told, dy by dx को क्या बोलते हैं, rate of change of y with respect to x, with respect to x, clear, अगर x चेंज हो रहा है तो y कितना चेंज हो रहा है, that is our aim is to find, clear, that is our aim is to find. Now rule number 3, rule number 3, suppose y equal to sin x, now suppose y equal to sin x, sin x, so dy by dx how much here, well remember here dy by dx will put over here what, sin x, this one, and from the formula remember this one, this is what, become cos x, so finally dy by dx how much here, dy by dx will be what here, cos x, this is the formula only है ना, no need to know how it is coming, how sin become cos, no need to know for physics, clear, maths student will deal all those things, they will prove how this sign become cos, but for physics it is not important to know how this sign become cos, it is not important, clear, only we have to remember and will apply in the questions, clear. Now fourth rule है ना, fourth rule, suppose y equal to cos x, suppose y equal to how much, cos x, y equal to cos x, so dy by dx will be है ना, will put here dy by dx will be d of y equal to what, cos x, so first put what, cos x in place of y, so it will be what, how much, dy by dx, so finally it will be minus sin x, minus sin x, remember this one, differentiation of cos x become minus sin x, will read like this, differentiation of cos x become minus sin x, differentiation of sin x become cos x, differentiation of sin x become cos x, clear, differentiation. Now next rule, fifth one, y equals to ln x, y equal to ln x. अच्छा, what is ln x है ना, just remember ln x means what here, log base e, clear, ln x means what, log base ex, clear, ln x means what, log base e है ना, log base 10 is different, clear. Now so dy by dx will be how much here, so put here ln x,
y is what? ln x. Y is what? ln x. Put here. So y equal to ln x divided by dx. Now it become how much finally? Become how much? This formula is, so dy by dx become, so ln x become how much? 1 by x. Ln x become how much? 1 by x. Ln x become how much? 1 by x. Clear? Now sixth one. Suppose y equal to e raised power x. Y equal to e raised to power how much? X. So dy by dx will be we'll put here e raised power x here, and the formula is what here finally. So dy by dx will be how much here? Same. E raised power x differentiation will be same. Clear? E raised power x, same differentiation. Clear? E raised power x differentiation, same. Now let's discuss some more variety of differentiation. Clear? For example, suppose y equal to sine kx. We know already differentiation of sine x become cos x, but here k is multiplied in x. So story will be what? Very simple. If anything is multiplied in x, so that number will multiply outside also. So to solve this one, first assume as a what? First we know what already, differentiation of sine x become cos x. So first write this one. So dy by dx will be finally how much? Very simple. Differentiation of sine x become cos x. So whatever written inside the sign, first same copy paste. Differentiation of sine become cos. Remember like this. Differentiation of sine become cos. So whatever written, same copy paste. Kx written, same copy paste. So differentiation of sine become cos, and what is multiplied in x, that will multiply outside also. Means k will multiply outside also. Story clear? For example, suppose y equal to sine 2x. Y equal to sine 2x. So finally dy by dx will be how much? Very simple. We know differentiation of sine is cos. अंधा भी बता देगा, छू छू के अंधा भी बता देगा differentiation of sine is cos. So first same copy paste, whatever written same copy paste. Differentiation of sine is cos, so whatever written first copy, and then what is multiplied in x? 2. So 2 multiply outside also. See here, for example, suppose y equal to ln, suppose y equal to ln 4x. Same rule is same. Differentiation of ln x is what? 1 by x. Differentiation of ln x is what? 1 by x. So whatever written here, x become 1 by, whatever written here, x here become 1 by x. Now see here same story. What here? We know differentiation of ln x become 1 by x. So first we'll assume as a total as a x. So differentiation of ln x become 1 by x. So 1 by what written here? 4x. First copy paste. And then what is written? What is multiplied in x? Same number multiply outside also. 4. So our answer will be how much, amma? 1 by x. Our answer will be 1 by x. Clear? For example, suppose y equal to suppose 2 cos, we'll see later this one. Constant multiplied outside, we'll see later. Suppose y equal to cos 3x, for example. So finally dy by dx will be how much? Very simple. Differentiation, first close your eyes, and we know already differentiation of cos become minus sign. Remember like this, differentiation of cos become minus sign. So first write here, cos become minus sign. So minus sign, and whatever written here inside the cos, same copy paste. And now what number is multiplied in x? Same number multiply outside also. So finally it will be like this. So finally our answer is minus 3
साइन 3x माइनस सी माइनस 3 साइन 3x। क्लियर क्लियर, छाप लीजिए आप लोग, है ना, कॉपी कर लीजिए। नाउ एक नोट लिखेंगे, है ना, विल राइट अ नोट, है ना, एनी कांस्टेंट inside differentiation always comes out from it। क्लियर, कोई भी कांस्टेंट अगर डिफरेंशिएशन के अंदर है तो वो अपने आप बाहर आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्यों नहीं, क्यों बाहर आएगा? क्योंकि कोई कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, दैट्स व्हाई कांस्टेंट कम्स आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल सपोज y इक्वल टू 4 sin x है, y इक्वल टू 4 sin x है। So what is dy by dx? Very simple. Our aim is to find what? dy by dx. So dy by dx will be how much? First put here y. First put y. Y how much? 4 sin x. 4 sin x divided by dx. Now 4 is a constant. 4 is a constant multiplied in this sign. So 4 will come outside. 4 will come outside here. So finally 4 will come outside here and it become what here? Sin x dx. And as we know differentiation of sin x is what? D of sin x by dx means differentiation of sin x. Differentiation of sin x how much here? Cos x. So our answer is dy by dx how much? 4 cos x. Our answer is 4 cos x. 4 cos x. 4 cos x. अच्छा, one more thing, है ना, one more thing. Suppose it is written d of, very important, suppose it is written d of sin x upon dx. How will read this one? How will read here, है ना, कैसे पढ़ेंगे इसको, है ना, कैसे पढ़ेंगे? Difference, d means here, d means differentiation of sin x. Now come downside again, start from again. D means differentiation of sin x with respect to x. This is very important. Sometimes this function means x is not same. Suppose for example here t is there. Now we cannot say this become cos x. We cannot say. Clear? This is very important. This function should be same. This one and this one. This function should be same. Function should be same. We'll do numerical, it will be more clear. Wait, है ना, wait. We'll do the numerical, don't worry. So we'll read like this. See here, differentiation. D means differentiation of sin x. Differentiation of sin x with respect to x, है ना. We'll read like this. D means what? Differentiation of sin x with respect to x. We'll read like this, है ना, for concept purpose we'll read like this. Clear? Story clear? Now suppose example, now, है ना, we'll read this one, है ना. Now suppose y equal to, है ना, same pattern लो, है ना, same pattern. Suppose I'm giving the question, y equals to 2 sin 3x. Now y equal to 2 sin 3x. So what is dy by dx? Dy by dx equal to how much? Put the value of y here. So d will be what here? 2 sin 3x upon dx. And directly we can write the answer. While phi
See here, 2 outside multiplied, so 2 will be no change, simple, same pattern. Any constant multiplied, same comes out. So 2 will 2, and now what remains? Sin 3x. Sin 3x means what? Differentiation of sin become cos, and whatever written inside the sin and cos, same copy paste. So it's cos 3x, and what is multiplied in x? 3. So multiply what? Outside also. So it is multiply here also, here also. Finally it will be what here? 3 to ja 6. 6 cos 3x. Clear? Again I'm repeating, listen here. This 2 will come out from the integration because 2 is outside multiplied, 3 is inside. Clear? 2 is outside multiplied, so any constant is there outside multiplied comes out here. So 2 outside. Now sin 3x, and for sin 3x already I told. Sin 3x is what? Already I told. Sin x become cos x. Whatever the written inside the sin and cos, same copy paste. And what is multiplied in x? That multiply outside also. So 3 also multiplied. So finally 6 cos 3x. Story clear? Story clear? Now copy this one. Now let's discuss some more variety of differentiation. For example, suppose y equal to sin x square. Clear? Y equal to sin x square. अब ये different form है, x square है. We have seen only for x, sin x become cos x. रूल वही है. अब इसको सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिक्स में एक रूल है, चेन रूल. But I won't discuss that rule. Clear? Very easy, है ना? We can है ना? Because we are not, why I'm not discussing that rule? Because this is the physics classes, not mathematics. Clear? So whatever the requirement will be there, I will discuss that part only, not much more. Clear? So finally, अब देखिए इधर, differentiation of sin become cos. Clear? अब इसको assume करो, है ना? इसको ऐसे आंख बंद करके इसको x मान लो, ऐसे आंख बंद करके x मान लो. x स्क्वायर है लेकिन x मान लो ऐसे आंख बंद करके. सो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा? cos x. सो dy by dx will be how much? cos x स्क्वायर है लेकिन x मानो. सो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बिकम cos x. अब लेकिन है क्या? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉपी पेस्ट हो गया. अब जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएट करना है. x स्क्वायर को आपने x माना था तो उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, उसको भी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x. इसको ऐसे सॉल्व करेंगे. ठीक है? अगेन मैं रिपीट करता हूं, बहुत आसान है. x स्क्वायर को पहले x मान लो, सो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बिकम cos x. सो x स्क्वायर को x माना, कॉपी पेस्ट हो गया. अब जिसको x माना है, जिसको तुमने x माना है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, अगेन एक बार और. क्लियर? अब क्या हो गया स्टोरी? ये cos x स्क्वायर, नाउ दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी x स्क्वायर बिकम 2x. सो आवर आंसर इज फाइनली 2x cos x स्क्वायर. सो dy by dx will be how much? 2x cos x स्क्वायर. नाउ सपोज, अब इसको सॉल्व करो, है ना? सपोज y equal to cos x क्यूब, सपोज x क्यूब, है ना? y equal to cos x cube. Same. So dy by dx will be how much? सपोज यहां पे x होता अगर, so cos x डिफरेंशिएशन व्हाट? माइनस साइन एक्स. क्लियर? माइनस साइन एक्स. अब इसको x क्यूब है लेकिन इसको x मानो, x मान लो इसको थोड़ी देर के लिए मान लो. क्लियर? क्या जाता है थोड़ी देर के मानने में? जीवन में बहुत कुछ मानते हैं हम लोग, होता थोड़ी है कि नहीं? मान लो यहां पर भी तो x क्यूब तो क्या माना है? x माना. सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इज व्हाट? माइनस साइन. सो हमने इसको x माना है, अपने दिमाग में इसको रखो, x है. तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बिकम माइनस साइन x. अब जिसको x माना था उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है. तो क्या है ये? डिफरेंशिएट कर दो इसको. डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार और डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएशन ऑफ x
डी मीन्स व्हाट, आई टोल्ड ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे पढ़ना है इसको अभी लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, है कि नहीं। अब देखिए इधर क्या हो गया फाइनली, माइनस साइन एक्स क्यूब, और ये क्या हो गया स्टोरी, ये हो गया 3x², है ना, 3x²। फर्स्ट रूल, whatever the power is there multiplied and decrease the power by 1, so x power having 3, so it become 2, clear, 3x²। so finally our answer is minus 3x² sin x cube, है ना, x cube। क्लियर, क्लियर, ओके, छाप लीजिए आप लोग, है ना। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, है ना, जो हमने अभी सीखा है ना, उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे y इक्वल टू x² माइनस साइन x, है ना, माइनस साइन x प्लस रूट x, है ना, प्लस 2x, लाइक दैट सपोज, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, अब नाउ सी हियर, dy/dx फाइंड, है ना, वी हैव टू फाइंड dy/dx। सो पुट करो यहाँ पे d, यदि x² माइनस साइन x प्लस रूट x एंड प्लस 2x डिवाइड बाई dx, क्लियर। अच्छा, ऑलरेडी हमने, है ना, ऑलरेडी वी हैव सीन, है ना, मींस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज व्हाट 1, differentiation of x² what become 2x, similarly differentiation of x cube what become 3x², है ना, clear। differentiation of root x become how much, 1/2 root x, है ना, we have seen already, है ना, differentiation of root x already we have seen this one, clear। and one more will remember, है ना, differentiation of 1/x, will remember this one, differentiation of 1/x if you use the formula, है ना, first formula। for example suppose y equal to 1/x, है ना, suppose y equal to 1/x, so finally, or we can write this is y equal to x power minus 1। now dy/dx how much, I told starting of this video, है ना, I told what is the rule, if y equal to x power n type, so whatever power is there we have to multiply first and then decrease the power, then decrease the power by 1, so already minus 1 power is there, again minus 1 power is there, so finally it will be minus 1 into x power minus 2। now x power minus 2 goes where, denominator, so minus 1 upon x², so differentiation of here will remember this one, differentiation of 1/x is what, minus 1/x², will remember this one, will full बट्टी, है ना, बट्टी मीन्स याद रखना, है ना, बट्टी मीन्स व्हाट, याद रखना, है ना, यदि सम डिफरेंट लैंग्वेज, है ना, क्लियर। सो इसको याद रखेंगे, d of 1/x is what, dx, differentiation of 1/x with respect to x how much, minus 1/x², remember this one, है ना। and actually if you do practice automatically this all things will be memorized automatically, अपने आप खुद से याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें खुद से याद हो जाएंगी, सब इंटरेस्ट के ऊपर है, इंटरेस्ट, जहां भी आप ज्यादा टाइम देंगे आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। मोबाइल पे ज्यादा टाइम पास करेंगे तो वहां पे ज्यादा मास्टर हो जाएंगे, खेलने में ज्यादा, है ना, खेलने में ज्यादा टाइम देंगे तो खेल में मास्टर हो जाएंगे, पढ़ने में ज्यादा टाइम देंगे तो पढ़ने में मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान है, कोई भी चीज करने के लिए बहुत आसान है, टाइम देना, टाइम देना, टाइम देना चीजों को, है ना, टाइम देना। अब देखिए इधर ना आ जाइए, अब स्टोरी, है ना, अब देखिए इधर इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सेपरेट कर लेंगे, है ना, अब इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे इसको, सो d of x²/dx, सेपरेट, है ना, सेपरेट करेंगे, x² का सेपरेट, देन माइनस साइन आएगा, माइनस, अब d ऑफ क्या हो जाएगा, साइन x, इसको सेपरेट करेंगे dx, अब फिर ये प्लस है तो प्लस बीच में आ गया, अब क्या है, रूट x है, सो d ऑफ रूट x अपॉन dx, क्लियर, देन प्लस व्हाट, प्लस, नाउ द प्लस सेम d ऑफ 2x अपॉन dx, क्लियर। अब सॉल्व करो इसको, नाउ
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑलरेडी वी नो 2x है ना, ऑलरेडी वी नो. डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बिकम cos x. डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड स्टार्टिंग लो है ना, 1/2 रूट x. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ 2x. नाउ सी हियर 2 इज आउटसाइड है ना, 2 इज अ कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट कम्स आउट फ्रॉम द differentiation, so 2 will come outside and what remains, x only. And differentiation, if 2 will come outside, so what remains here, x only. So differentiation of x with respect to x, how much 1 only. Clear? So finally it will be how much here, 2x minus cos x plus 1 upon 2 root x plus 2. This is our answer, this is our answer. So suppose if more term is given है ना, suppose more term given, so we can solve like this by keeping separate and solve. Clear? Otherwise if you have so much practice, so directly from here you can write here, see here, directly you can write, see, x square become 2x minus sign same, sin x become cos x, then plus sign, okay, plus sign, then root x become 1/2 root x, then plus sign here, then 2x means 2 will outside है ना, 2 is there, 2 is constant, no change, and x differentiation become 1, so 2 into 1 2, like this, very easy, huh? And we'll remember this story, huh? We'll remember this one, and all depend upon interest, है ना. If you practice, automatically memorized. Clear? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही चीजें याद हो जाएंगी. क्लियर? चलिए छाप लीजिए इसको. अब देखिए सब चीजें है ना दिमाग में रखेंगे, है ना, याद रखेंगे. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप चीजें याद रहेंगी. डिपेंड करता है, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट. जिंदगी का एक वसूल है ना. जहां पे आप टाइम ज्यादा देंगे उस फील्ड में आप हो सकता है टॉप न करें, बट आप परिपक्व तो हो जाएंगे, उस लेवल तक पहुंच जाएंगे. हो सकता है आप टॉपर ना बने, लेकिन आपको चीजें अच्छी तरह से मालूम होंगी, अच्छी तरह से पता पड़ जाएंगे. क्लियर? बहुत आसान है. जिस चीज में टाइम दीजिए उस चीज में मास्टर बन जाइए. वेरी सिंपल. जिंदगी का एक ही वसूल है. जिस चीज में ज्यादा टाइम दीजिए उसमें आप मास्टर बन जाइए. अब देखिए सपोज है ना, सपोज y इक्वल टू है ना, वी हैव सीन एक्चुअली, सपोज y इक्वल टू टी स्क्वायर. क्लियर? एंड बट वी हैव सीन फॉर व्हाट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना. वी हैव सीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो मींस y डिपेंड्स अपॉन x. सो in this case है ना, see here, I will compare first both, then we will see the numerical. See, y written left hand side, x written right hand side, y written left hand side, x written right hand side. So whatever written left hand side, it will be first come where, in the numerator, and what is written right hand side कहां पे आएगा, नीचे आएगा, means denominator, means x written right side, so x will come denominator. Very simple. Clear? Whatever written left hand side numerator, whatever written right hand side denominator. Very simple. And we know already what this one, what here, 2x. Clear? यहाँ पे भी same story, same story, same. y left hand side numerator, t, अरे y depends upon x square है ना, y depends upon x, here y depends upon t. Very simple. अरे जैसे x है वैसे t है भाई. क्लियर? जैसे x है वैसे t है ना, सेम. So what is written left, so what is written left hand side, y, so y will come where, numerator, means dy will come numerator. And what is written right hand side, t, so t will come denominator. So dy by dt become how much here, same formula, what, 2t. Formula will be same, concept will be same. X square become 2x, t square become 2t. Suppose x cube is there, so x cube become what, 3x square, so t cube become how much, 3t square. Same story, copy paste, same formula is same, concept is same. Clear? Story clear? This one I think clear, huh? I think clear. Now suppose we have to find y equal to, suppose the t cube plus t square plus 1 and x equal to 2t, suppose x equal to 2t. Clear? And find है ना,
find dy by dx. Our aim is to find what? dy by dx, है ना? How to find this one? See here, है ना? Very easy, very easy, है ना? Very easy, very easy. See here, same. So first I will write one by one, है ना? First what given? Y equal to t cube plus t square and plus 1 plus 1 plus 1. Now I told same story. Whatever written left hand side will come in where? Numerator. And what function is there? T is there. Actually right hand side t functions are there. अब कुछ बच्चा जो शरारती है वो कहेगा सर मास्टर जी यहाँ पे तो टी है, अब यहाँ पे टी है, यहाँ पे तो टी नहीं है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हर जगह टी है। अरे बच्चा मैं यहाँ पे टी इंटू टी 0 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। यही नंबर पावर 0 1, तो टी पावर 0 आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो इट विल बी फाइनली, है ना? नाउ आई एम रिमूविंग दिस वन, है ना? Now what is written numerator, है ना? Sorry, what is written left hand side? Same where? Numerator. What is written right hand side? What? Denominator. So right side t is there. T. T. Here also t, and here also t. I explained already. Clear? 1 we can write t power 0, no problem. So it will be how much now? Now direct do here. So है ना? Just last question I have discussed. If so much term given plus already I discussed, है ना? So t cube become how much finally? 3t square. T square become how much? 2t, and 1 is constant differentiation 0. Clear? No need to write. Similarly x equal to 2t. X equal to how much given? 2t, right here. Now what is written left hand side? X. So in the numerator x, what? X will come, means dx, differentiation writing na, d will come dx. And what is written right hand side? Right hand side which term is there? T. So dt will come. Clear? Now what here? Now 2 is a constant, same keep, and t, differentiation of t. Suppose y equal to x, suppose for example. So what is dy by dx? 1 na? Yes or no? So here x equal to t, x equal to 2 comes outside, no problem. Oh, see 2t upon dt. Now 2 is a constant. Any constant always comes out from the integration. Sorry, any constant always comes out from differentiation, है ना? So finally 2 will come outside. Finally it become d of t upon d of t, है ना? Clear? So what this is, है ना? Differentiation of t with respect to t, it become what? 1. Are cancel रे dt. Otherwise like this also. See here, if y, already I discussed, if y equal to x, so here dy by dx how much? D of y is x, and already we have seen this one. Already we have seen what amma? This answer is 1. So finally our answer will be dx by dt how much? Dx by dt will be 2. Dx by dt will be how much? 2. So finally our answer is, now our aim is to find dy by dx. Now this equation number 1 and this what? This equation number 2. If you divide this two equation, we don't want dt. See here, we have to find dy by dx. We don't want dt. So what we'll do here, this equation number 1 and this equation number 2, if you divide both equation, so dt cancel and we'll get what? Dy by dx. Now 1 by 2. Do here 1 by 2. Equation number 1 by equation number 2. Divide here finally. So dy by dt. And left side here dx by dt. Left hand side division, right hand side division. So dx by dt will be how much finally? See here, idi right hand side how much? 3t square plus 2t, and for this equation right hand side 2 only. So finally it will be how much? Now dt what here? Cancel. So finally it will be dy by dx only. Dy by dx will be how much? Now 2 divide here separate. So 3 by 2 t square and plus 2 divide here in 2t. So 2 cancel. Finally it will be t. So this is our answer. Okay, है ना? Copy paste. कॉपी कर लीजिए आप लोग. हाँ,
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।